Good morning, everyone. Thank you all for joining. Hope I'm audible. Yes, sir. Yeah. Good morning. Good morning. Good morning, guys. Good Good Uh, morning. morning, sir. Good morning. So guys, you can raise your hand, keep it raised so that I know that who wants to speak and who is available today because many of you have sent me the news. Um, so we'll start with Rahat. Yeah, Yes, sir. yeah. So, just a small update on the hotel sector. The wedding and travel to drive hospitality recovery in in second half of the financial year 2026. As we have seen that the hospital and the hotel industry has a small disruption due to the pollution and the global uncertainties. The domestic hotel sector is expected to rebound in second half of the half of 26, led by the wedding and travel demand. After a weak first half, the growth is likely to be ARR led, with the occupancy rate to stay the same for the year. So in Bangalore, Delhi, and Hyderabad, they have been they have been outperforming with their peers, while Mumbai is expected to recover in the second half on the back of the music concerts, T20 World Cup, and conferences. The T20 World Cup is scheduled to start from the 8th Feb onwards. Uh, based on my analysis, the key beneficiaries for this will be Chalet, Lemon Tree, and IL. For Chalet hotels, the company could benefit recovery in conferences and exhibition activity due to their strong premium business exposure in these segments, despite a higher leverage. For Lemon Tree, they will benefit on the aggressive asset-led expansion in Tier 2 and Tier 3 cities. Sir, as I already mentioned a few days back, that based on the religious tourism, Lemon Tree will be a beneficiary of it. Beneficiary, yes. So this will lead to the expansion ARR by 10 to 12. Occupancy rates to go up by 75 to 100 bips. And for IHCL, it will strong brand image and expanding pipelines, which will benefit the ARR and the side. Okay. Okay. So how to sum it up? बीच में abruptly बंद हो गया. Yeah. So, so based on my analysis, the cherry Charlotte Hotel and IHCL based on their demands. So we can see that the hotel sector companies are will be continue to perform good in the 2 to 3 quarters. They have also given the names of the company, no? Indian Hotel, Chalet, Lemon Tree, and yeah, I don't know what is this. Yes, sir. Teacher Surendra, we were talking. I'm not sure which company is this, Hmm. but they have as I as we were talking about the hotel sector, everything is about about the hotel sector today in the newspaper. Majority of the things about the hotel sector, wedding season improving, concert के नाम बोल सकते हो तुम राहत, Linkin Park, Linking Park and मैं DJ DJ Snake. Hmm. and T20, obviously the major one which is happening in India. So it is across India and Sri Lanka. तो श्रीलंका में भी जो hotels है उनका भी it is co-host by India and Sri Lanka. तो Yes, श्रीलंका sir. में भी जो hotels है उनके भी you will see occupancy increasing. Okay, average ARR यहाँ पे था in okay, I think कोई और the revenue per room is per available room is not expected to increase, but it is said to be in the mid and the high single digit. ये बोला है वालों ने. It's a Yes, sir. good sign. So ARR is expected to increase. ARR is expected to increase. Yes. Yes, sir. Okay. Again, once again. So it's in the Okay. third line. Third line. Yes. Yes. I think someone else have also written. Okay. Hari Krishna. Hari Krishna. Something on the Misha. Okay, one second. One second. Sorry. Oh, sorry. Bobby has the same news. Okay. Bobby, will you like? Hari, you go next. Okay. Bobby. Yeah. So, so just some few additions. Hmm. So I just had checked that despite like extended monsoon and geopolitical uncertainties in the first half of FY26, the operating performance still remained resilient. So like
IHCL had reported 9% growth to rupees 10,300. Charlotte Hotels had saw a growth of 7.2% to rupees 8,088, while Lemon Tree had delivered 8% growth to 4,358 year on year. So this can say that despite all this extended monsoon and geopolitical uncertainties, there was a sustained pricing power. And also this sustained pricing power is due to the hotel demand rising at 10% in first half of FY26, outpacing the demand was outpacing the supply. So outpacing supply of 8%. So looking ahead, hotel supply is expected to grow at a 7.7 CAGR. With additions in key business only 4.6%. So key business cities are Delhi, all the metro cities, Delhi, Mumbai, uh, and all. And a leisure destination is 6.2%. So there is a sustaining demand supply imbalance. So this is supporting the ARR and RevPAR growth Yeah, right. in the in the ahead of, it's like in the next coming quarters. Where did you So find this yeah, news, Bobby? Where did you find this news? no, it was in this अपना कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन ऑफ आईएचसीएल में वो डिमांड का था, सो Okay, वहां से मैंने लिया। okay, okay, fine. सेम है, यही लिया मैंने, जो भी की Mm-hmm. पॉइंट्स है, बट आई Okay, मिक्स्ड इट विद द कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन ऑफ आईएचसीएल, सो okay, इट 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 सम्स अप ना, तो इसलिए मैंने great, लिया। great, great, good one. हाँ, तो बेसिकली वही है और कुछ नहीं है। एट द सेम टाइम वही, बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई ऑफ 7.7%, नो, Mm. I do see a good potential in this what is a hospitality sector. Absolutely. Yes. Yes. Yeah. So one more second, and one more. Someone else has written. Okay, Darshi has also written about this hotel stocks. Darshi, you there? Yes, sir. Yeah. It's Okay. Good. same as it is. Yeah. Just update it. बोलो ना तुम्हारे हिसाब Uh, से. okay. Just a minute. It's an update of the hotel sector that Indian hotel companies the revenue growth is the 12% growth of the year on year, and Lemon Tree also the 8% year on year. In the Chalet Hotel is the 13.4%. So it's basically because of the strong wedding season and the festive season booking. And overall hotel industry revenue growth is 11%. But in the September quarter it's a weak due to the monsoon season and the n- non-seasonal sector quarter. So in the December quarter it's a peak season, so revenue growth is 11% growth, and the ARR growth is the 9 to 10% industry occupancy. Okay. Darshi, you need to present it in a much better way. You know how Bobby and Rahat did. Okay. You have see the problem is now when you wrote a newsletter, there is no sentences in this. If you write Okay. in pointers, our sentences are too big. Hotel Okay. industry revenues grew 11%, despite a weak September peak I season just expected. mentioned the some data points only, so Ah, that's no, 1 second. Just assuming no one has told the news, just start it again. okay. Hmm. In Indian hotel sector is heading the strong peak season, supporting the improving the demand and rising power pricing power. So the average revenue rate is the growth of the 9 to 10% in December 2025 quarter, and in this September quarter due to the monsoon and industry performance. So the growth आराम से is आराम से आराम से okay. हाँ. So in the September quarter, due to the monsoon and the many other factors, the growth is down, but average revenue is year-on growth is 11%. So Indian hotel company reported is a 12% year-on-year growth, and the 1 second, दर्शी तुमने देखो ये लिखा है 3 पॉइंट. I am तुमने लिखा अच्छा है, but when are you presenting, you're not presenting in a better way. See, because others are also listening, na, us listening to you.
तुमको खुद के नहीं बात करना है, दूसरों को समझ में आए कि नहीं, ऐसे बात करना है. Now, what is the 3 point? Hotel stocks, hotel industry. You can start it. No, hotel industry is expected to grow 11%. Oh, sorry, hotel industry grew 11% year on year despite a weak September quarter. Okay. 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 First point. This can be a heading. So यही तुमको बताना है कि hotel industry 11% से grow despite of weak September quarter. So I will expect, अभी आगे क्या हुआ है? What has happened? Sir, there is a peak season in December, so it is expected that the ARR will increase by 9 to 11%. Correct? Okay. And the occupancy is expected to be reach around 672 to 74% in FY26. So we can also say that the premium housing demand has increased by 8 to 10% for premium hotel demand is expected to grow by 8 to 10% from FY24 to 28. हो गया ना 3 points? Okay. इतने इजीली थे 3 points बताने थे. जो मुझे दिख Yes, रहा है yes. तुमने लिखा है, बट जब तुम बोल रहे हो तो मुझे नहीं समझ रहा तुम क्या बोल रहे हो. Okay. Hotel sector Understood. increased by 11%. Occupancy increase expected to increase by, hotel sector increased by 11% because of weak demand. It is expected to increase in December as the wedding season, as there are a lot of wedding seasons, and ये भी तुम add कर सकते हो ना, wedding seasons है, concert है, ये सब है. So Yes. demand is expected to increase. Second, so the demand में क्या हो रहा है sir? Because of the demand increase, average room rates are expected to increase by 9 to 11%. उसमें भी सर, उसमें भी occupancy is expected to increase to 72 to 74%. Sir, what is interesting is that the premium hotel demand is expected to increase by 8 to 10%. कैसा मैंने वो fillers use किए, मैम बोलते हैं ना, विद्या मैम, use fillers. Yes, yes. Okay. वो तुम बताओ ना, कन्वर्स करो. You don't have to just डेटा है तो प्रेजेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है. Okay. अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? हाँ, तो उसमें होटल, अभी तुमने 3 कंपनीज के बारे में लिखा है. क्या लिखा है वो? तो Yes. इंडियन होटल्स के बारे में क्या लिखा है? सिर्फ मुझे हिंदी में बताओ, क्या लिखा है इंडियन होटल्स के बारे में? उसका रेवेन्यू ग्रोथ लिखा है. नहीं, कितना बताओ और ना, तो हिंदी में बोलो क्या लिखा है वो. उसका इंडियन होटल्स का रेवेन्यू ग्रोथ है 12% ईयर ऑन और लेमन होटल्स का है 8% एंड चैलेट होटल्स का है 13.4%. 1.4%. हाँ, नहीं तो एक ही बोलो ना सर. इंडियन होटल्स का रेवेन्यू हैज इंक्रीज बाय 11% ईयर ऑन ईयर, सॉरी 12% ईयर ऑन ईयर. डबल डिजिट रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड इन FY25-26. ओके. अरे फिर क्या है? फिर तो हमारे लेमन ट्री पे, लेमन ट्री का लेमन सर, लेमन ट्री इज इंक्रीज बाय 8% मिड ईयर ऑन ईयर. क्यों बढ़ा है वो? इट हैज बेनिफिटेड फ्रॉम मिड मार्केट डिमांड एंड मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट. फिर अभी थर्ड है चैलेट होटल. से चैलेट होटल का सबसे ज्यादा बढ़ा है, बोले चैलेट होटल इंक्रीज द मोस्ट आउट ऑफ द टू, दैट इज 13.4%. But probably uska occupancy was declined to 760 basis point due to weather. So strong wedding season, festive bookings, recovery in MIC, meetings, incentives, incentives, conference and exhibitions, rising domestic leisure and spiritual tourism expected to gradually pick up. हो गया ना? इतना अच्छा न्यूज है, बट तुमने लिखा अच्छा है वो, बट तुम्हारा न्यूज मैं अच्छा प्रेजेंट कर रहा हूँ. ये बात है, तुम खुद का प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो. ये Hi, सब sir. डेटा पॉइंट पे. हाय हाय अभिषेक. Hi. Sorry, can I add one thing? या हाँ, थैंक यू. Sir, वो एक और हो सकता है कि we can add the number of rooms these hotel have. तो मतलब उसमें फिर वो भी दिख जाएगा कि इन्वेंट्री कितना है सबके पास. हाँ, एंड ये अभी कौन अभी से कर रहे थे. सेगमेंट में कौन क्या कर रहा है वो भी लिख सकता है बिकॉज वी कांट कंपेयर IHCL टू शैले टू लेमेंट्री और वो करेक्ट. APJ हाँ, ऑफ कोर्स. करेक्ट. वो तो अभी वो जस्ट हमने वही चालू किया लास्ट सैटरडे को, उनको यही बताया था कि नंबर सब रूम्स डाल के रखो कितने हैं. सर एक वेबसाइट है HVS एनारॉक का हाँ. where they give monthly India hotel data. Okay, where अच्छा. you can find ARR कितना है, रूम साइनिंग्स कितने हुए हैं, ओपनिंग्स कितने हुए हैं. बाई कंपनी नहीं देते बट हाँ, ओवरऑल देते हैं. सो वो डेटा काफी यूजफुल हो जाता है व्हेन वी आर डूइंग इंडस्ट्री स्टडी. क्या क्या डेटा है? क्या लिखा है? इफ यू जस्ट पुट ऑन गूगल HVS एनारॉक हॉस्पिटैलिटी रिपोर्ट, कोई मंथ का डालो ना, ऐसा अक्टूबर 2025 डालो HVS एनारॉक. HVS एनरॉक हाँ, सितंबर डालो. सितंबर. सितंबर 2025 हॉस्पिटैलिटी डाल दो, हॉस्पिटैलिटी रिपोर्ट डाल दो.
हाँ ये पहला वाला खोलना एक बार। हाँ जस्ट स्क्रॉल डाउन, इधर एक डाउनलोड नाउ है ना। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड डेटा, आप अगर इसका खोलोगे ना डाउनलोड हो गया रहेगा हाँ अभी। ओके। हाँ अभी नीचे आओ एक बार। ये तो ठीक है, ये तो टेक्स्ट है, ये सब अच्छा है, बट नीचे हाँ डेटा रहेगा। हाँ ये देखो, ब्रांडेड होटल मार्केट। इज इट टोटल रूम्स दिस 36,000? इज वाईटीडी सर, वाईटीडी। तो जनवरी में ये लोग मंथली डेटा देते हैं, उसके बाद हम लोग को वाईटीडी देते हैं, सो यू हैव टू कीप सबट्रैक्टिंग वो मंथ हाँ का। 4 month करेक्ट। हाँ साइनिंग बाय कीज, अच्छा ये साइनिंग्स है ओके। हाँ ओपनिंग है फिर सर, नए कीज है ना जैसे विच आर ओपनिंग। हाँ हाँ यस, ओके ओवरऑल इंडिया में। नंबर ऑफ ओपनिंग बाय कीज ओके। ये भी दिया Tier 1 Tier 2 Tier 3। यस आप नीचे आओगे इसके बाद तो ये तो ठीक है, ये तो नहीं, दिस इज नॉट। ऊपर आ जाओ ना सर, ऊपर आओ। इसके भी पहले आ जाओ, हाँ इसके पहले आओ। ये वाला। वो एक एआरआर का डेटा देते हैं ये लोग का, कहाँ गया, ऊपर आ जाओ। हाँ ये रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, वो लोग टेबल में देते हैं। हाँ ये okay। ठीक है ARR 70 सेक्टर अच्छा। मतलब आप लोगों को ग्रोथ रेट लेना है तो यू कैन टेक एन एवरेज बेसिकली। ओके रेफ का अच्छी तो काफी मतलब एक्चुअली इसमें इंडियन में होटल में वो अनब्रांडेड भी बहुत सारे होंगे ना। अनब्रांडेड बहुत सारे होते हैं, बट देन हम लोग हाँ ब्रांडेड इसलिए देखते हैं बिकॉज हम लोग स्टडी उसी का कर रहे हैं ना, शैले बट उसका सब। अपना ये रेफ पार तो काफी कम है ना मतलब ओवरऑल। अपने वो हिसाब से लोग तो एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज कम ही निकलते हैं दिखता कम है। ही दिखेगा हाँ। हाँ वो बिकॉज विजिबिलिटी भी हाँ वो, हाँ वो वैसे नहीं देख सकते, बट नहीं आई दिखता मीन यू हाँ। कैन गेट अ सेंस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, मतलब 58 to ओके 60% इज ओके, दैट इज करेक्ट। हाँ दैट इज करेक्ट हाँ। आई थिंक बिकॉज अच्छा व्हेन इसमें यू देख टेक रहे थे ऑक्यूपेंसी ऑफ लग्जरी होटल्स तो वो कम ही होता है। विनीतिव का देख रहे थे विनीतिव 60 पर हाँ वो लग्जरी में ऐसे ही होता है, आप ईआईएच का देखो तो उतना ही है, लीला का भी उतना ही और है। ये IHCL का तो अराउंड 68-70 के आसपास है। हाँ तो बिकॉज वो जिंजर वगैरह भी आ जाता है ना। हाँ नहीं ओवरऑल सिर्फ हाँ इसका वो सेगमेंट का। उसका रहता ही है थोड़ा, मतलब हाँ उसका तो वैसा थोड़ा रहता ही है, बट मैं अल्ट्रा लग्जरी का बात कर रहा हूँ। मतलब आप अगर चलो आईएचसीएल हाँ। लोगे तो उसमें फॉर एग्जांपल आप इसका भी ले लो, ताज तो एक है ही, ठीक है। फिर आज दूसरे का भी देख आते हैं लो। ना उसके, विवांता आता है वगैरह वगैरह। विवांता लग्जरी नहीं है ना, विवांता तो अल्ट्रा लग्जरी, ताज हाँ के ही अल्ट्रा लग्जरी। अल्ट्रा लग्जरी नहीं है, मैं बोल रहा हाँ हूँ कि हाँ वो कंसोल लेवल पे आपको कंसोल लेवल पे दिखेगा हाँ। थोड़ा वैसा। नहीं नहीं ये IHCL का लोग अलग से देते हैं ना विच इज होटल सेगमेंट। अच्छा नहीं उसमें यहाँ पर जिंजर भी आ गया। हाँ तो जिंजर भी आ गया हाँ। वो उसके जिंजर पीपीटी विवांता में वो अलग अलग देता है, बट इतना अलग से भी नहीं देता है वो। हाँ कल हम वही बट कर रहे थे। दिस इज गुड, दिस यू कैन, मतलब ये अच्छा है। दिस यू कैन एटलीस्ट हैव फॉर बेसिक डेटा, ऐसा मतलब कोट करने के लिए बेसिकली। एवरेज रेट्स ओके। ये अच्छा है ना ओवरऑल समझ रहा है कि कौन से ग्रो कहाँ पे हो रहा है गुड़गांव आप कैसे। शैले का देखोगे, शैले भी उसका एरिया वाइज ऑक्यूपेंसी भी देता है, एमएमआर में कितना था। फिर वो ये भी देता है कि उसका रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज में कितना था और नॉन रिजॉर्ट में कितना था। कौन चाले। हाँ अच्छा हाँ तो वो उसमें देख सकते हैं। और वो आपने वेदर का बोला ना, उसका जो वेदर का इम्पैक्ट आया दैट हाँ इज मेजरली बिकॉज उसका जो एक होटल है वो ऋषिकेश में, द अच्छा वेस्टिन। ओके। तो वो इम्पैक्ट पता हुआ बिकॉज पता था उत्तराखंड में उत्तराखंड में फ्लड्स हो गया हाँ था। फ्लड्स हो गए थे हाँ हाँ ओके ओके। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि वो रूम्स ऐड करेंगे तो ऐड बेटर करेंगे लगता है। हाँ। अब वही कल हमने वही टास्क दिया अभी सबको ये भी कोई करने वाले सब लोग नो दे विल ऐड रूम्स जितने भी होटल्स है। फीस हम्म कितने हैं लोकेशन भी है मैंने बोला है कि नो मेजर लोकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज यू सेड ना अभी ऋषिकेश पता था तुमको कि वो हाँ वेदर इम्पैक्ट हुआ है। करेक्ट। तो भी पता होना चाहिए अभी कल ना हम लोग तुम बोल रहे थे ना विनेतेव का मैं विनेतेव का कल देख रहा था। तो हाँ विनेतेव मेजोरिटी उसका पोर्टफोलियो पूरा पुणे में ही भरा हुआ है। हाँ हाँ पुणे में ही है, बैंगलोर और पुणे, हाँ बैंगलोर बहुत कम बैंगलोर है में भी बट फिर हार्ड भी। बहुत कम है हाँ मतलब हाँ मेजरली पुणे इट इज ही इन है पुणे। उसका। यस। वो थोड़ा स्केप्टिकल लगता है ना कि यहाँ से सिर्फ पुणे पे ही फोकस है और नहीं ऊपर वो से अभी वो मतलब वही कर रहा है ना, इट इज डाइवर्सिफाइंग ना, अभी उसका डाइवर्सिफाइंग वाराणसी हाँ है, वाराणसी श्रीलंका आ रहा वाराणसी है, है वाराणसी आ रहा श्रीलंका है। आ रहा है। अभी ये वही वर्ल्ड कप का मुझे याद आया श्रीलंका में भी हम्म है वर्ल्ड कप। नहीं उसका श्रीलंका में प्रॉपर्टी वो याला नेशनल पार्क में आ रहा है तो वो अलग। अच्छा अलग है हाँ क्या एंड ओके। उसका वो रिट्स कार्ल्टन में ही दिखा रहा है शायद उधर, तो वो तो एकदम अल्ट्रा लग्जरी हो गया। हम ये बोल रहे थे कि अगर IPL बताए वो आ रहा था बैंगलोर का विल बैंगलोर का होम ग्राउंड शायद से पुणे होने वाला नहीं था। नहीं वो कैंसिल कैंसिल हुआ कर ना वो दिया। कैंसिल हो हाँ गया ना वो हाँ। वापस बैंगलोर में ही लेके आ गए। बैंगलोर के हाँ
तो वो तो है, मतलब ये होटल्स में दैट्स वी हैव टू चेक द ट्रेंड, वेदर एक चेक करना होता है, फिर वो आपको फिर वैसे ही हाँ कॉर्पोरेट इवेंट्स, कोई कॉर्पोरेट इवेंट, कॉन्सर्ट्स वगैरह, इसने भी कॉन्सर्ट्स शायद काफी मेंशन ज्यादा। किया है जी ईटी में कुछ तो, कि हाँ वो डीजे स्नेक कोई तो आ रहा है डीजे करके। स्नेक, हाँ डीजे स्नेक लिंकिंग पार्क मुंबई में वाला लिंकिंग। सर मुंबई छोड़ो ना, वो एक पोस्ट मैलोन करके एक आर्टिस्ट है, उसने अभी गुवाहाटी में शो किया है, सोचो। हाँ हाँ, एंड गुवाहाटी का इफ यू सी दी होटल्स दैट आर कमिंग अप, 5 स्टार होटल्स आर ह्यूज। दे ओके। ओपन अ न्यू एयरपोर्ट ना गुवाहाटी में। हाँ गुवाहाटी में, करेक्ट करेक्ट तो हाँ। वो तो वैसा वी जनरली लिंक कि अरे इतना बड़ा एयरपोर्ट क्यों बनाया है, सो समथिंग बिग इज कमिंग देयर वैसा। Obviously, हाँ। काजीरंगा है वहां पर, दैट वे ये इट्स अ यहाँ गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। ओके काजीरंगा, अच्छा हाँ नेशनल पार्क है ना उनका। हाँ हाँ, हाँ हाँ। एंड नॉर्थ ईस्ट का भी मेजर गेटवे है, वहां से सब स्टेट हाईवेज जाता है आपका, सब अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड। ओके, वो ये नॉर्थ ईस्ट इज ग्रोइंग क्वाइट देखना चाहिए, बट हाई पेस वही ना। उधर थोड़ा हाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का थोड़ा ठीक है, प्रॉब्लम्स रहता है, प्रॉब्लम है तो हाँ। हाँ, तो लोग इसलिए जाते नहीं है। मैं तो नहीं। बट इट्स ओके, बट अभी तो आई थिंक फोकस विल बी ऑन कॉर्पोरेट ओनली। सर ये भी इम्पैक्ट कॉर्पोरेट। होता है, आपको बोलता हूँ ना, ये जो यूएस डेलीगेशन विजिट्स आया, तो हम्म, वो लोग जनरली ना ठीक है हाँ। पूरा का पूरा फ्लोर या पूरा आधा होटल बुक कर लेते हैं, बुक करो करेक्ट। बिकॉज इट्स कॉन्फिडेंशियल वैसा सब रहता है इसलिए। हाँ डेलीगेशन में 2 लोग तो नहीं आते हैं। जैसे अब वही तो अपने को इवेंट्स ही Sir, ट्रैक करना है, व्हिच आर द इवेंट्स दैट वी नीड टू ट्रैक, ऐसा है। या या हम्म, या सॉरी टू डिस्टर्ब बीच में। हाँ हाँ इन ठीक है। sir, कंटिन्यू। ओके या शिव या श्री सतीरन Satri. Sir, I have sent the same news, sir. So sorry, person. या गो अहेड। This news is regarding tourism sector, industry-wide news. Wedding and travel is to bring the, growth to hospitality sector in the second half of financial year 26. This was mainly driven by growth in average room rate. Uh, Geographically, hotels in Bengaluru, New Delhi, and Hyderabad continue to outperform peers, while the hotels in Mumbai lag due to relatively weaker revenue per available room growth. So the events like concerts of Linkin Park, John Mayer and DJ Snake, and T20 World Cup and other conferences are expected to drive hotel demand in Mumbai in second half of financial year 26. Room additions by large companies are estimated around 10 to 12% in financial year 26. This was mainly through asset-light models such as management contracts and franchises. So analyst picks some of the top hotels in the industry, which includes number one, Chalet Hotels. This is not according. This is not the rankings, but the hotels. Chalet Hotels, Indian Hotels, and Lemon Tree Hotels, and RPG Surendra Park Hotels. The upside potential in these hotels was expected to be around 18 to 42%. So when we break out these hotels, Chalet Hotels analysis is constructive due to concentration in high barrier business districts and exposure to premium corporate demand. Lemon Trees supported by aggressive asset-light expansion in Tier 2 and Tier 3 cities. Indian Hotels is driven by strong brands, diversified portfolio, and expanding pipelines. So to conclude, first half of the financial year 26 was there is a certain disadvantage for hotel sector due to geographical tensions and the seasonality stages. But second half there has been quite positive signs because of events and company specific positive news. Okay. Thank you. Okay. Okay. Okay, fine. So guys, Mumbai, they're talking a lot about Mumbai and yesterday, Sadran, why were you not there in the morning class on yesterday? Yes, sir. Past week, have been due to personal stuff. I can't attend, sir. What So happened to your interview that you had applied? I have applied, sir. But I am waiting for the reply from the area, sir. But they had They replied, asked, you said. they had replied, but they asked for additional details also. Uh, So I also send those details. I have been uh, waiting for the detail from for their reply after sending the but one details. second, guys, 1 second. Huh?
Hello. Yeah, sir. Okay. So guys, the task that I've given you to find out where are the hotels now, it is very important. Now, Abhishek, he is an analyst already. I said, I always talk about him in the call in the class as well. So he's there on the call. So uska dekho, how research. So it is not because he's analyst today. जब वो research कर रहा था ना, when he was with me before getting the role, तभी भी उसका thought process यही था ना, to find something which is different from others. So like Bobby, you have done a good job today that I found out that you have gone to understand कि वो average revenue rates कितने हैं and why it is increasing. So okay, that comes only when you have data with you. So the Excel file is very important, and you have to keep on adding stuff on it. So we know that average revenue is expected to increase by 10 to 12%. Darshi has given me something that the premium hotel demand is increasing. So we can talk about 10% increase in the premium demand. ARR increased by 7 to 9%. Hotel industry overall has increased by 11%. So we know that 10, 12% will be the growth. Now when you talk about the concerts in Mumbai and events in India overall, specifically in Mumbai, IHCL has the highest hotels in Mumbai, the premium ones. They have also mentioned about the Ginger in the call. That Ginger hotels, they have reached around 100 crores revenue, and they are expected to increase actually. In specific, sorry, they was around 500 crores, and out of that 100 crores was from Mumbai only alone. So again, Mumbai is so IHCL has everything. They have premium product also. They have a mid segment also, and they have a normal mass segment product as well. So Ginger, I think RevPAR is average room rate is around 3 to 4,000. Vivanta is around 5 to 6. Taj is around 10 to 12, and another premium is around or the luxury is around 20 to 25,000. Okay. So we have other news as well from Hari, you can go ahead. Sorry, Hari. Sorry to keep you waiting. सर मैं कर दूं प्रेजेंट तो जाना है क्या? अच्छा, Yes, oh, sir. okay. Sir, should I Yeah. present or? I think Abdur wants to present. One second. He wants to leave for the office. Yeah, Abdur. यस सर Yeah. So, hello everyone. The news is regarding the Indian automobile sector, basically the exports in the passenger vehicle segment. So, Indian passenger vehicle export is set to cross 1 million mark by the end of 2025. By November 2025, with 790,000 units already exported, it has already surpassed the 2024 yearly export of 743,000 units. So, the export is now almost double of what the 2020 numbers, which stood at 428,000 units. Maruti Suzuki, Kia, Skoda, Volkswagen, they have successfully filled in the gap that was created by Ford and General Motors when they exited India. So Maruti Suzuki has become country's largest exporter with its highest ever number of 332,000 units in FY25, and their numbers are basically led by Fronx and Jimny model with more than 100,000 units exported to more than 100 countries. And even before its domestic launch, the 𝗖𝗹𝗹 is already being exported to European markets. So the basically the reason behind this momentum in the Indian exports is the focus towards SUVs and the localization of components that has reduced the cost, as well as the improvement in manufacturing standards. So the conclusion that we can have from this is that the momentum is set to continue, and Indian automobile sector is not just a consumption market anymore, but a global production and export powerhouse. Thank you. Sir, Um, can I add some yeah, add-on points to this risk elements? yeah, go ahead. Yes. So, in spite of being the third largest exporter, we have the risk from the Mexico's the tariff hikes in which gonna start from the January. So Mexico is India's third largest PV export market. So roughly around 25% of India's total passenger vehicle exports. So even if we account for the Maruti exports, which exports mostly around 20 to 25%, around 66 to 70K units annually to Mexico. So even if we account for let's say $10,000 a car, so that would hit an EBIT of around like 100 million approx yearly. So if tariffs are implemented, so the Maruti Suzuki could expect to lose certain amount of volumes in the coming future. And because there are also, but Maruti is also not like concentrated heavily on Mexico. In spite of being 25%, it's also focused on other countries like GCC, Latin America, and Africa. So coming forward, it will be very interesting to see how this Mexico tariff hike could impact the Maruti Suzuki and other passenger vehicle segments. Yes.
Darshan, you can talk about, rather than saying 25% of the export, you can talk about the entire part of export. Okay, how much percentage? See, let's say 25. The export is around Maruti export around 10%, if I'm not wrong, 10 to 20%. And out of that 10 to 20%, मतलब let's say 100 का 10 है, तो 10 में से 2 जो है वो तुम्हारा मैक्सिको से आ रहा है. So on the overall part, it doesn't have that much impact. But obviously you are right that it will take a hit on the EBITDA at some point in time. So we have to see that how much hit it is taking. Okay. Hello. Yeah, Yes. Hari. Yeah, Hari. You can go ahead. Hello. Yeah, Hari. You can go ahead. No, I'm Harsh Vardhan. No, actually, Hari wants to speak. Harsh, 1 second. Okay. Hari wants to speak. Yeah. Hi, sir. Hari, yeah. Hi. Yeah. So, sir, I have a news on Meesho. So, Meesho stock has climbed to the peak after its initial public offering. So, the stock was listed on December 10th, and the issue price was rupees 111. And within 2 weeks, the stock has climbed to 235 rupees. And the Meesho focuses on value commerce strategy, which prioritizes low price and cost efficiency over the other risk contemporaries over the speed and premiumization. So the Meesho's main growth strategy was to Meesho focused aiming on small sellers, basically on tier 2 and tier 3 cities, which was considered as a constraint in the market at the beginning. And by the end of 2024, Meesho has become the first horizontal e-commerce player in India to turn to free FCF, like the free cash flow to positive. So the FCF was rupees 197 crore. And the CLSA expects the Meesho market share to grow from 8.5% to 10% in the next 10 years. And coming to the challenges which the Meesho has to face in the coming years is that it has to extract more values from the existing assets. So while preserving the affordability, which is the trademark for Meesho. So this is what makes the Meesho stands out. They And have done an FCFF positive on Meesho? sorry, sir? They have FCFF is positive on Meesho? Yes, sir. I got it from the newspaper. Like it's showing 197 for सर positive. दिस तो इज शोन एक सर साल पॉजिटिव है सर. सर इसका मुझे एक डाउट था, मैंने भी मीशो पे लिखा है कि द आर्टिकल सेज दैट फ्री कैश फ्लो 154 करोड़ पॉजिटिव है, लेकिन उसने उसी साल नेट लॉस किया है 54 करोड़ का, तो उसका लॉजिक मेरे को समझा नहीं. तो आई थिंक वो खाली एफसीएफ पॉजिटिव दिखा रहा है. That's what I was confused कि ये FCF positive है इसका. सर अभिषेक, सर सर द वो एक कंपनी साल The company reported a net loss of 53 crores in FY24 and generated positive free cash flow of 197 crore. तो ये मुझको समझा नहीं कैसे. वो तो ठीक है. लॉस एंड फ्री कैश फ्लो नथिंग टू डू. फ्री कैश फ्लो क्या है? एलटीएम CFO फ्री माइनस कैश फ्लो है कैपेक्स सर. वो हाँ. एलटीएम फ्री कैश फ्लो है. वी हैव टू रेफर द आरएचपी फॉर द कैलकुलेशन. वो ऐसे नहीं देखते वो लोग उसको. मतलब इफ यू एकदम वैसा नहीं देखना चाहिए. वो आरएचपी में ना उन्होंने एलटीएम फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला दिया हुआ है कि वो लोग कैसे करते हैं. तो FY23 में वो नेगेटिव था, फिर 24-25 में वो पॉजिटिव हो गया, फिर H1 में भी इट इज पॉजिटिव. इट्स अ गुड साइन ना. पॉजिटिव है तो फ्री इट्स अ कैश फ्लो गुड मतलब साइन. मीशो जैसे हाँ, कंपनी का. वो उसमें वही की ट्रिगर था कि इवन व्हेन आई वाज राइटिंग द नोट, उसमें भी वो हाँ, की ट्रिगर वही था कि इट इज अ एफसीएफ पॉजिटिव. पॉजिटिव बिजनेस. बाकी उसका मॉडल इज नॉट लाइक, वो भी अच्छा ही मॉडल है, ऐसे कुछ मॉडल ये है. नहीं हाँ, है. द गेम हियर इज वॉल्यूम. मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम. टीयर हाँ, 2 टीयर 3 में जो वॉल्यूम है वही आपका गेम है. वहां पे अमेजोन नहीं चलता है. करेक्ट. हाँ. तो इसीलिए वो मतलब, और उसका एकदम मतलब बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है दैट वे. उसके उसके रेवेन्यू ग्रोथ इज वेरी गुड दैट वे. Yeah, as long as it is making positive cash, so a startup making positive cash is a good sign. हाँ हाँ हाँ. हाँ, दैट्स व्हाई वी आल्सो हाइलाइटेड ना. मैं आपको भेजा था वो हाँ नोट. भैया था. उसमें हाँ, हमने बराबर. वही हाँ. हाईलाइट किया था कि एफसीएफ तो पॉजिटिव है तो इट इज गुड. दिस वाज द फर्स्ट ईयर सर जब एफसीएफ पॉजिटिव आया. नहीं नहीं, सेकंड ईयर था ये. वही मैं इस बोल रहा हूँ. एलटीएम हाँ, एलटीएम एफसीएफ एलटीएम देखोगे और सेकंड. हाँ FY24 फर्स्ट ईयर था. हाँ हाँ. एलटीएम FY24 में अराउंड 200 करोड़ था. उसके बाद free cash flow went to 592 crores in FY25. H1 FY26 made about 580 crores. Okay.
तो उस हिसाब से, और बैलेंस शीट भी इतना, मतलब ये सब प्लेटफॉर्म कंपनी में बैलेंस शीट हैवी भी नहीं होता है, डेट वगैरह कुछ नहीं होता है। सर ये बहुत एसेट करेक्ट। लाइट कंपनी है हाँ, वो मीशो। प्लेटफॉर्म हाँ बिजनेस में कभी भी प्लेटफॉर्म है, हाँ। नहीं होता क्या इट्स कुछ एन भी। आईटी कंपनी ना, सेम लाइक हाँ जोमेटो। हाँ। ये सॉफ्टवेयर तो है ना, इसका उनका मेन ऑफिस सेम। इसका मेन क्या है स्ट्रैटेजी कि दिस इज फोकसिंग ऑन वैल्यू कॉमर्स। तो मेरे को पता नहीं था क्या होता है, मैंने सर्च किया आज। सो वैल्यू कॉमर्स मतलब हम जो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे खरीदते हैं उसके कंपैरिजन में वैल्यू कॉमर्स बहुत ही सस्ता है। लो बजट में चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे हम रोड साइड स्टॉल्स से खरीदते हैं तो टियर 2 टियर 3 करेक्ट। सिटीज़ के लिए बहुत ही कम वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्जिन्स भी बहुत कम होते हैं, लेकिन रेवेन्यूज और वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चला आता है, यस। तो ये करेक्ट। अमेजोन ने एक नया उनका ऐप भी शुरू किया, अमेजोन बाजार, पिछले साल। और शॉप्सी फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है, प्रिडोमिनेंटली टारगेटिंग वैल्यू वैल्यू कॉमर्स, वैल्यू ई कॉमर्स। या हाँ, तो मीशो इज द, वो तो पता है ना, मीशो, यू डोंट यूज मीशो? मीशो इज नो क्वाइट सर, मैंने फेमस यूज़ है। नहीं किया था कभी, बस हाँ, सुना था। क्वाइट फेमस है, सस्ती चीजें तो आज मिलती हैं मैंने उधर। पूरा उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था। हम्म, एक्चुअली उसका वैल्यू प्रोपोजिशन थोड़ा अलग है। वो इट डजंट, सो बेसिकली एज सर सेज, वो जब भी हम लोग वो मीशो के बारे में पढ़ते वी शुड अंडरस्टैंड कि वो उसका पूरा वो बिजनेस करता क्या है, तो उसमें ही डजंट चार्ज एनी फी टू द सेलर। या हाँ, तो प्लेटफॉर्म के वो लिए। जब भी वो चार्ज नहीं करता है, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और आपका उसके लिए चार्ज करता है। हम्म। आपका अगर गूगल में जैसे आपका पेज फर्स्ट आना चाहिए, वैसे अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट आना चाहिए, चार्जेस दैट। एंड इफ यू हैव ऑर्डर्ड एनीथिंग फ्रॉम मीशो, यू ऑलवेज, यू ऑल्सो सी दैट कि डिलीवरी चार्जेस नहीं होता, फ्री है वो। और सर इट वाज द फर्स्ट ये ई कॉमर्स टू सेलर कमीशन उसने जीरो कर दिया। वो वही वही सारे वही बोल सेलर्स रहा हूँ, वहां पे सेलर को खत्म कुछ भी हो गए। चार्ज नहीं करता है ये। तो अभी फ्लिपकार्ट ने हाउ भी इज फ्लिप वर्किंग अभिषेक, ये इतना वॉल्यूम्स पे करेगा? कर मतलब लेगा इसका। ना सर। वो क्या करता है बेसिकली, आपका सेलर को कमीशन चार्ज नहीं करता है, एंड देन इट हैज हाँ। ऑनबोर्डेड ऑल द इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ऑन द प्लेटफॉर्म। ठीक है। अच्छा। तो हाँ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को उसका कोई भी जो भी सेलर है, अगर उसका प्रोडक्ट को उसको, सो हाउ इट हैज क्रैक द कोड इज, इट अंडरस्टूड दैट फिन ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का रीच बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसने हाँ। उसके प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रील जैसा एक चीज लाया है। ठीक है। तो आप हाँ। उसमें जाके देखोगे तो वो कुछ कुछ जो सेलर्स है वो लोग बोलते हैं कि आप लोग हमारा प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। ठीक है। हाँ। तो वो एडवर्टाइजिंग से कमाता है, तो जब भी पे आउट आता है ना सेलर को, जब जो हाँ। पे आउट करना होता है उससे एडवर्टाइजिंग फी काट के ले लेते हैं वो। अच्छा। बट हाँ कितना तो होगा एडवर्टाइजिंग फीस? वो तो फिक्स होगा मेरे ना? को एग्जैक्टली आइडिया इतना, मैं बट इतना हम फिक्स लोग होगा ना? नहीं मतलब क्या, वेरिएबल नहीं होगा, या फिक्स होगा ना वो तो? आई हैव टू लुक एट दैट, मैं उतना डिटेल में अभी तक गया नहीं हूँ। बट अच्छा। देन दिस इज लाइक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडल व्हाइल एनालाइजिंग द आईपीओ कि ये था। एंड उसके वजह से उसका रीच बहुत बहुत ज्यादा है। तो वो रीच के वजह से ही वो करता है बेसिकली आपका। तो उसका वो जो की मेट्रिक्स वगैरह होता है ना, वो आप देखोगे तो वो काफी अच्छा है दैट वे। एंड उसका वो एक उसने वो आरएचपी में बहुत अच्छे से दिया है उसने, वो बहुत लंबा हो जाएगा मैं एक्सप्लेन करने जाऊँ तो। बट बट ये वो अब डिलीवरी चार्ज कौन लेता है फिर? हु हैंडल्स द डिलीवरी? उसका खुद का ही है। फिर उसका तो चार्ज लगता होगा ना उसको तो? वो Sir, मुझे, sir, like हाँ बट actually it charges 37 rupees for per orders, like delivery charges, फ्लैट वाला, अच्छा, and फ्लैट वाला हाँ तो। flat, and उससे वो उसका main revenue आ रहा है, and like Valmo is Meesho own logistic and delivery करेक्ट। platform. तो So पहले डिलीवरी करता था इसका, अच्छा। डिलीवरी जो अच्छा। कंपनी है ना वो करता था हाँ हाँ हाँ। पहले, फिर उसने वैल्मो चालू किया और यहाँ से करवाना चालू किया। और सर ये मीशो ऐसा नहीं है कि वन डे डिलीवरी पे बहुत फोकस करता है, हाँ, दो थोड़ा तीन दिन टाइम का लग जाए आता तो भी करेक्ट। चलेगा, बट करेक्ट कंपेयर करेक्ट, टू हाँ। बाकी कंपनीज। बट करेक्ट दिस करेक्ट। कॉन्सेप्ट इज वेरी कॉम, ये अभी इंडिया में है, ये बहुत हाँ कॉमन है, वेस्ट में तो बहुत कॉमन है, यूएस वगैरह में। और इफ यू, इंडिया में इसका कोई पीयर नहीं है, इफ यू वांट टू डू अ पीयर मतलब एनालिसिस। यू आर सेइंग इसका वैल्यू पीयर कॉमर्स राइट, इस, वैल्यू कॉमर्स हाँ, की बात कर रहा है ना? हाँ, इंडिया में कोई पीयर है ही नहीं ना। हाँ मैंने इसका भी आज पीयर ओनली चाइना में है, पीडीडी करके एक कंपनी है। फिर उसका मतलब हाँ like उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज 237 रुपीज, तो मतलब सस्ता है फ्लिपकार्ट एंड काफी, हाँ। अमेजोन का ऑलमोस्ट मोर देन 1200 है, सो और नहीं, इसका, उन्होंने और सेपरेट इसका ऐप्स दूसरा लॉन्च एक चीज किए आप हैं, देखोगे ना, इसका amazon और दूसरा आप फ्लिपकार्ट चीज, ने। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ amazon और फ्लिपकार्ट ने दूसरे लॉन्च किए इसको compete करने के लिए, amazon बाजार और शॉप्सी। वो तो इंस्टा मार्ट है ना, वो तो मतलब इट इज अरे फॉर वो क्विक तो कॉमर्स। कैश बर्न है। क्विक कॉमर्स नहीं नहीं इट इज वो क्विक नहीं, कॉमर्स।
वो क्विक कॉमर्स नहीं, वही वही कह रहा हूँ मैं। आई थिंक ये अलग है। दिस इज लाइक मीशो से compete करने के लिए मैंने रीड किया कि वैल्यू कॉमर्स नाम का मैंने चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ा आज। इसमें कम मतलब बहुत ही सस्ता और कम मार्जिन का सामान बेच रहे हैं वो। मुझे पता नहीं था, अभी पता चला। बट सर वो सस्ता और कम मार्जिन का सामान है सर, उसकी क्वालिटी भी तो इतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ना। पर और आपको यूज भी 2 दिन का ही करना है ना। लास्ट ईयर लॉन्च किया था अमेजोन ने। पर आपको व्हाट आई यूज फील है भी ना, एक ही दिन के लिए करना है ना, तो फिर what I आप feel है क्यों। ना, मेरा मतलब मेरा क्या thought process, see, if positive is obviously it's a good business, but when I look at as an analyst point of view, as an investor point of view, मुझे ऐसा एज ओबी ने बोला क्वालिटी खराब है, तो मेरा जो इंडिया फोकस है, इंडिया इज फोकसिंग टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन, ठीक है। प्रीमियमाइजेशन, तो यस। मुझे अगर बिजनेस चालू करना होगा, लेट्स से आई विल नेवर स्टार्ट अ बिजनेस लाइक मीशो। मुझे पता है उसमें वॉल्यूम्स कम है। तो अभी जैसे वो है ना, जोमेटो स्विगी है, मतलब उसमें भी ट्रेडिंग बिजनेस ही है, सर वो उल्टा सारे ट्रेडिंग बिजनेस है। वॉल्यूम्स इसमें ज्यादा है, मार्जिन कम है। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम पे खेल ही नहीं रहा ना, वो तो बोला ना एडवर्टाइजिंग से कमा रहा है वो। तो वॉल्यूम हाँ कितना And भी sir, हो जाए। actually, sir, we are also not ordering from Misho. ये तो वो ये मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इट इज नॉट अ बैड बिजनेस। वॉल्यूम्स आते हैं तो वॉल्यूम्स पे खेल ही नहीं रहा है मीशो। मीशो इज प्लेइंग ऑन अ फिक्स कॉस्ट। कोई मैं अभिषेक को पूछा कि नहीं वो नहीं नहीं नहीं, एडवर्टाइजिंग वॉल्यूम तरीका है। वॉल्यूम तो कर रहा है सर, मैं सर वही नहीं, वॉल्यूम मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। वॉल्यूम हाँ, नहीं कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नहीं सेइंग नहीं, कि वॉल्यूम कर रहा है, हाँ। बट उसका वॉल्यूम में उसका ये नहीं आ रहा ना, उसका वेरिएबल थोड़ी वॉल्यूम से आ रहा है। मतलब अगर जैसे जोमेटो वॉल्यूम करता है वो अलग है, और मीशो वॉल्यूम करता है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी अलग है। डेफिनेटली डिफरेंस हाँ है, बट देन हाँ व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट, व्हेन यू हैव टू सेल अ प्रोडक्ट एट एक्स प्राइस, ठीक हाँ, है, आप उसको x/2 पे सेल कर रहे हो, बट आप उतना ही वॉल्यूम पे कवर कर रहे हो, तो इट्स फाइन ना, बिकॉज फाइन हाँ। अगर आप उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखोगे तो FY23 में दैट वाज अराउंड 337 रुपीज, ठीक है। तो अभी वो कम हो गया, FY25 में 274 रुपीज हो गया, ठीक तो है। एकदम सस्ती चीजें बेच रहे हैं। हाँ, तो आप नहीं नहीं, पहले तो एज एन एनालिस्ट वी विल सी कि अरे 336 का 274 क्यों हो गया, हाँ ठीक है। बट देन हाँ नॉट लाइक दैट, मैंने मेरे आईपीओ नोट में भी वही डाला है कि आप देखोगे तो वो कम हुआ है, बट इफ यू सी दी टोटल ऑर्डर प्लेस्ड, वो FY23 में 102 करोड़ का ऑर्डर था। 102 रुपीज हाँ, नहीं, 102 करोड़ टू ऑर्डर करोड़ था। वो हाँ, 183 करोड़ हो गया FY25 में। तो करेक्ट, ओवरऑल आप देखोगे तो वो उधर ही घूम रहा है। उधर ही घूम रहा है हाँ। हाँ, तो वो दैट इज व्हाट, उसका जो प्री आईपीओ उसने सीएनबीसी में इंटरव्यू दिया था ना, दैट वाज वेरी वेरी गुड। वो एक बार आप सुनो, ठीक है। हाँ दैट वाज गुड, मतलब ऐसे नहीं है कि इट इज नॉट अ गुड बिजनेस, इट इज एक्चुअली, मतलब ठीक है। एंड ठीक जो है हाँ प्रीमियमाइजेशन का भी किसी ने बोला ना कि हाँ वो प्रीमियमाइजेशन पे है, कि वो हम लोग लेते नहीं है, बट हाँ, दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज कैचिंग अप इन इंडिया। सिंगापुर है, मेरे करेक्ट। को अगर आज गोवा जाना है, ठीक है, हम्म और मेरे को वहां पे 2 दिन रहना है, ठीक है, हम्म, मैं सोचो मैं 1,000 रुपए अ, का कपड़ा नहीं नहीं खरीदूंगा, लिखा ही दूंगा, ठीक है, करेक्ट मैं करेक्ट। 400 रुपए का कपड़ा खरीदूंगा, पहन के वहीं पे फेंक के आ जाऊंगा। मैं फेंक के आ जाऊंगा, करेक्ट हाँ, ये कंसेप्ट काफी बढ़ रहा है। हाँ, एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, इट इज वेरी वेरी गुड फॉर छोटी छोटी चीजें घर पे, मतलब आपको अगर लाइटर चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए घर पे, गैस लाइटर करेक्ट चाहिए, हाँ ठीक है, तो कुछ चाहिए ऐसा छोटे छोटे हाँ किचन अप्लायंसेस के लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको कुछ चिपकाना होगा, एक स्टैंड लेना होगा, तो ये सब सस्ता मिल हाँ, जाता है वहां पर। सस्ता मिल जाता है, करेक्ट। एंड क्वालिटी तो वैसे ही रहेगा ना, आप जितना पैसा भरोगे उतना क्वालिटी नहीं मिलेगा। खरीदूंगा, और मैं अगर 200 रुपये भर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर भी करूंगा कि ये 10 बार ही चलेगा। करेक्ट हाँ। तो वो हाँ, वो कंसेप्ट बढ़ रहा है इंडिया में, एंड इट इज ग्रोइंग, ऐसा हम्म। है। मतलब हाँ। इवन इवन इफ उस दिन मैं भी इवन आई वाज, मुझे शादी में जाना था, एंड मुझे वो येलो कुर्ता चाहिए था बिकॉज इट वाज अ हल्दी। तो मुझे पता है हम्म। वो एक ही दिन पहनना था, उसके बाद पहनने वाला हूँ नहीं मैं। आई वाज हम्म। जस्ट फाइंडिंग, तो नॉर्मल दुकान में गया था, इट वाज 3000 2000 3000, ऑब्वियसली द क्वालिटी वन। बट वो मीशो पे मैं देख रहा था तो 100 200 300 रुपये में सर कपड़े मीशो आते हैं। छोड़ो ना, आई वॉज डूइंग अ ग्राउंड स्टडी, ठीक है, हाँ मीशो के टाइम पे। मीशो जैसा ही मिंत्रा भी है, ठीक है, हाँ मिंत्रा पे देर इज अ 30 मिनट डिलीवरी, इनफैक्ट चेक करने के लिए तो मैंने हाँ, ऑर्डर भी किया, और 30 मिनट में हाँ मेरे पास कपड़े आ गए घर पे। अगर मेरे को एक हाँ, फ्लाइट पकड़ना हो और मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं स्टिल 30 मिनट में ले सकता हूँ। ले सकता है, तो सही है। दीज आर दी सी व्हाट आई फील इज डिसरप्शन इज इम्पोर्टेंट। वो प्रीमियमाइजेशन है कि क्वालिटी है, वो डिफरेंट है। हम्म। तो वैसे मैंने सोचा, ये ऑफ भी एक कोर्स। है वो ना, उस उस दिन मैंने ये भी देखा, मीशो के अलावा ना, जैसे कि मेंस कुर्ता, मैंने किया किया ही था मैंने गूगल। इसका भी मुझे ना 30 मिनट्स में आ गया था, करेक्ट। घर पे करेक्ट। आ गया था। Definitely. इसकी मैं शो I करूँ mean, हाँ। on one hand, we are saying Blinkit is very good delivering in 10 minutes. On the other hand, we are हाँ saying अरे मीशो अच्छा नहीं है क्योंकि वो एक दिन में डिलीवर करता है। हाँ मतलब हाँ वो थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है, बट ठीक है, मतलब आई वोंट कमेंट ऑन द स्टॉक प्राइस।
ठीक है, हाँ बट वो अलग है, वो उसका मैंने स्टडी नहीं किया तो मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ स्टिल आई थिंक अभी वो कुछ ऑल टाइम हाई पे है, शायद 1 लाख करोड़ का राइट मार्केट राइट कैप राइट। भी क्रॉस कर दिया है। किसने, मीशो ने? हाँ, लास्ट थर्सडे को शायद वन ओके लाख हाँ, करोड़ क्रॉस वो किया बीस उसने। तक का, हाँ 20 तक सर का अभी बोला तो ना, लिस्ट हाँ। अभी तो लिस्ट हुआ वो डबल हो गया नहीं नहीं, वो तो हाँ होता है, वो आईपीओ में है वो। आप उसका जब भी एक 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 वन याद रखना, कभी भी आईपीओ में नाइन जब भी हाँ स्टॉक लिस्ट होता है ना, तभी फ्लोट नहीं होता है, ठीक है। 98,000 करोड़ कुछ है अभी मार्केट। हाँ, तो वो फ्लोट नहीं होता है, ठीक है, तो फ्लोट नहीं होता है तो स्टॉक प्राइस भागता है। सो वो पूरा फ्लोट का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा कि वो क्यों आईपीओ के टाइम पे सब स्टॉक भागते हैं। क्योंकि अवेलेबल शेयर्स ट्रेडेड जो मार्केट में होते हैं वो कम होते हैं। कम होता है हाँ। जब ये एंकर सेलिंग आता हाँ है तब मार्केट में फ्लड हो जाता है, इसलिए एंकर के टाइम पे स्टॉक गिर जाता है एकदम से। हाँ, तो 1 साल के बाद रूल होता है ना वो। हाँ, वो जो भी है, पंजाब क्या। तो राइट। नेवर रिलेट स्टॉक प्राइस टू, मतलब आईपीओ का रन अप टू वैसा, मतलब कि यार ये बढ़ गया, ऐसा नहीं हो, वो फ्लोट कम है इसलिए बढ़ गया वो। हाँ ओके। आई गुड थिंक द वन। ओके। मेन फैक्टर तो उनका जो कैश फ्लो पॉजिटिव आया उसका रीजन मुझे लगता है, पहले तो वो थर्ड पार्टी डिलीवरी ये करता था बाय यूजिंग डिलीवरी, तो उनको हम्म। उनको भी पे करना पड़ता था, लेकिन अभी उन्होंने उनका खुद का ही एक आर्म बना दिया जो डिलीवरी पार्ट मतलब डिलीवरी करेगा, तो इसीलिए करेक्ट हाँ। एक मेन फैक्टर है, वन ऑफ द रीजंस कि उनका हाँ पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि अभी उनको देना नहीं पड़ रहा है किसी को यस। और इनके वजह से वो डिलीवरी का बिजनेस भी डिस्टर्ब हुआ, इसीलिए फिर उसको अ, मुझे लगता है। नहीं, वही है, आप तो उसका मार्जिन हुआ देखोगे है तो समझ जाएगा। like even I was like maybe वो गति का पढ़ रहा था एक बार मैं, so like they have con calls में they have specifically mentioned that Meesho they have started their own in-house delivery thing, so उससे उनके margins hit हुए हैं। यस, so whenever when we talk about a company who is a monopoly या इसका कोई competitors नहीं है, तो जब ये पिच जाके तुम किसी फंड मैनेजर को पिच करते हो ना, ही विल से ठीक है मैं ही खोल दूं तेरा कंपनी। इट्स लाइक दैट। मैं एक बार गया था ऐसा पिच करने को, तो बोले कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ठीक है फिर मैं चालू करता हूँ कर। पैसा तो है लोगों के पास चालू करने। इट इज जस्ट अबाउट यू डोंट, आई पर्सनली डोंट इन्वेस्ट इन अ कंपनी हु डजंट हैव अ कॉम्पिटिटर, बिकॉज यू कैनॉट जज कि वो अच्छा कर रहा है खराब कर रहा है। एंड वन कॉम्पिटिशन यू आर हिट। तब वो बोलते हैं ना, इकोनॉमी और फोर्ट्रेस 5 फोर्सेस। अगर तुम बोल रहे हो कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज हाई, तो ये सब कंपनीज में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस इज हाई। अगर मीशो कर पा रहा है तो वो कोई भी पी फंड कर देगा, और ऐसा इतना इजी बिजनेस है तो अभिषेक ये भी एक ध्यान रखना, इतना इजी नहीं बिजनेस नहीं है नहीं, ये। आई आई एग्री, हाँ आई टोटली हाँ एग्री, ये 100% होता है मोनोपोली बिजनेस में। हाँ ये एंड वी हैव टू वेरी वेरी केयरफुल बिल्कुल। इन अदर केस की मोनोपोली बिजनेस अगर बहुत टिल्टेड है टुवर्ड्स गवर्नमेंट रेगुलेशंस, हाँ तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि करेक्ट। ये गवर्नमेंट कुछ भी रेगुलेशन लेके आएगा ना, तो पूरा का पूरा बिजनेस मतलब लाइक, अपसाइड डाउन हो हाँ। हाँ लाइक अभी अभी वो ये मोनोपोली नहीं है, ये मोनोपोली बिजनेस नहीं है, द एग्जांपल आई एम गिविंग, बट इफ यू सी कंपनी। कंपनीज लाइक ड्रीम फोक्स, ठीक है, उनका भी ऐसे ही हुआ था कि सब लोग ने बोला अरे उसके पास बहुत एयरलाइन का लॉन्जेस एयरलाइन है है, करेक्ट वो कर हाँ लेगा हाँ। ये कर लेगा, बट द मेजर रिस्क वाज ऑल द एयरपोर्ट्स, नोबडी डिड दिस एनालिसिस बिकॉज ऑल द एयरपोर्ट्स वर बीइंग ओन्ड बाय अदानी, ठीक अदानी है। हाँ। तो ये एक बड़ा रिस्क था कि एक बार अगर अदानी ने कोई रेगुलेशन लाया ना, तो देखो अभी क्या हो गया, क्या मतलब हो गया आई हाँ। मीन इट्स जस्ट कि मतलब द स्टॉक इज डाउन कितना, 700 का स्टॉक इज नाउ अवेलेबल एट 140। लास्ट ईयर भी आईआरसीटीसी का स्टॉक गिर गया था 20% कुछ, गवर्नमेंट ने नहीं नहीं, वो रेगुलेशन 3 साल पहले वो था, तो बिकॉज ठीक है, गवर्नमेंट ने वो रेगुलेशन चेंज किया था, बट दैट इज हाँ डिफरेंट, दैट इज स्टिल वो तो डिफरेंट। गवर्नमेंट ही है हाँ। हाँ, गवर्नमेंट ही ओनर है उसमें, ठीक है, हाँ तो हाँ वो अलग है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि प्राइवेट, जैसे सर ने बोला ना, मोनोपोली बिजनेस में ये बहुत डिसरप्शन का बहुत रिस्क रहता है कि कोई भी हम्म। आके कुछ भी चालू कर देगा ना, तो तुम्हारा बिजनेस तो सीधा, अभी अर्बन कंपनी का देख लो। अभी अभी फॉर एग्जांपल इंडिगो का वो नहीं प्राइस नहीं, कैप कर इंडिगो, दिया। प्राइस इंडिगो कैप अलग कर है, दिया ना। इंडिगो इज डिफरेंट, ठीक है। लेट्स नॉट हाँ। हाँ, थोड़ा इंडिगो, नो नो, रहते हैं हाँ। आई वाज हाँ जस्ट सर सेइंग मोनोपोली, तो आई हाँ। जस्ट सेड कि अर्बन कंपनी का हुआ। इफ यू रीड न्यूज़पेपर यस्टरडे, देयर वाज अ न्यूज़ ऑन स्नैपडील, ठीक है, कि हाउ हाँ स्नैपडील इज एक्सपेंडिंग, तो वो वैसे ही करता है, 10 मिनट में देयर इज अ हाउसमेड एट योर होम क्लीनिंग फॉर 1 आवर एंड गोइंग। तो अर्बन कंपनी का बिजनेस तो उसमें, मतलब वो स्नैपडील अर्बन कल स्नैप अर्बन भी कंपनी का बिजनेस में भी आ सकता है, हेयर हो कटिंग में सकता भी है एकदम करेक्ट। से। करेक्ट। तो ये रिस्क तो है। तुम भी ध्यान रखना, मतलब आई स्टे अवे फ्रॉम दिस ऑल स्टॉक्स। हाँ हाँ सर, हाँ।
वो तो थोड़ा सर वो बड़ा रहता है तो आईपीओ हाँ ठीक है वो तो तो आईपीओ वो सर स्टडी करने के लिए अच्छा है, इट इज गुड। अच्छा है, हाँ एक्चुअली गुड, इट इज अ गुड एक्चुअली वन। न्यूज़ लेटर के लिए मैंने भी स्टडी किया क्योंकि न्यू इंडस्ट्री है तो या इंटरेस्टिंग ओके, था। there's more news about आगे wants to speak Nimish. Sir, I wrote a newsletter on an unlisted stock. Should I still present it? ठीक है, तुम्हारा न्यूज़ मुझे दिखा नहीं आज, where have you sent? Sir, on your number. I'll just say a hi. Yeah, ये कौन से नंबर पे भेजा तुमने, अलग नंबर पे भेजा क्या? बस अच्छा ओके, हाँ it was not saved. हाँ yeah, go ahead Nimish. Okay, sir. So the news is on Belgium waffle company. Recently, there's a firm, Bixer. It was previously Upper Heat Partners. It acquired a 45% stake in the Belgium waffle company for 770 crores, valuing the brand at around 1700 crores, and uh, it it signals a strong demand in the quick service dessert space. So since 2015, the chain has expanded to nearly 700 outlets in 250 cities and delivered around 450 crores in revenue in the year FY24, earning a EBITDA of around 62 crores, which is expected to grow to 80 crores in the year of FY26. Uh, Sir, the deal comes amid global and premium cafe and pastry brands expanding in India, like Tim Hortons, Laduri, Prater Manager, brands such as these. According to NRIA, India's food service market is projected to grow to 7.76 lakh crore by FY28, signaling a compounded growth of 8% per annum. Stocks we should watch out for are Devyani International, Sapphire Foods, Jubilant Foodworks. Since this move by Wixer signals a strong acceleration in India's eating out trend, a younger base, and more increasing consumer spend. Correct, correct. We were talking about this also, with the growth of tourism, this all quick service restaurant is also growing. So I said now mainland China, I was talking about. I think previously I was talking about this mainland China or even Devyani foods. I specifically don't like Burger King and KFC. So even the Pizza Hut part, I don't like. So Westlife is one, who is into McDonald's. That is also you can talk about. Westlife है, Jubilant Food, obviously, yes, Jubilant is growing. The Avina's part. Quick service restaurant, I'm just finding a specialty restaurant, barbecue nation. What I actually go out, I like eating out. I not like eating out, but I just to be there for just an experience. But mainland China is what I like, but बहुत expensive है at times. Yeah, sir. Yeah, Mainland China is expensive compared quite to others. expensive. Yeah, it's quite expensive. Like these other restaurants, like they're all in the range of 100 to 500, हाँ, but mainland China, it's a little on the हाँ, high side. on the higher side, yes. Let's see how it works on, but they are expanding. They are also expanding. But Yeah, sir. yeah, So, yeah. yeah, sorry, sir. I'll write something on a listed company tomorrow. Mm-hmm. No, this Thank is you. also fine. You can, see, even if I write on unlisted company, but if you link it to a listed company, this trend, if you're seeing this trend on unlisted companies, obviously listed company will also do good. Yeah, sir. Or something. That's good. Okay, you can bring it to listed company. That's fine. Yeah, sir. Thank you, sir. Okay. Yeah, Aniket, you have something on the northeast part? Can you throw some light on it? Yeah, sir. Yeah, yeah. So I've written on the Northeast tourism. Uh, like the headline came in today's paper, like their economy, state economy is growing at a pace of around 1.6 times what India is going today. So I linked it with the tourism sector. So the government is infusing around 1.8, 4.8 trillion in investment in Northeast so far, which is the 10% of their gross budget support, what they have given to the various states. Uh, the GDP of across eight northeastern states is growing at a pace of 10 to 12% CAGR.
this development is boosting our region tourism sector. I've lived down the stocks which are expanding in Northeast. Like IHCL is investing about 25 billion and adding about 30 hotels, which is like they are currently operating at a base of 40. Lemon Tree is also expanding their keys from 80 to 560 by 2030. Juniper, which is also known as the Hyatt Group, has signed agreement for a five-star resort, uh, like signaling a luxury like chains are coming into the state. And overall, the hotel rooms by 2030 will be around 3,000 plus in the state. This rapid development by the government and the infrastructure push, the connectivity, will boost our tourism in the uh, sector. Sector, yeah. So Aniket, this news can be said in a much excited way that if I were here at your place, I would have specifically said that, sir, IHCL is investing 15 billion into the to add 30 hotels and currently operates 14 hotels. So when you say something like this, now it should be attractive because we are talking a tourism thing we are talking about, and this is the perfect news. Just now only Abhishek said that, sir, Northeast this there is a huge potential in the Northeast. So you can add on this, sir. We Correct. can add on to Abhishek that the IHCL is investing 25 million and to add 30 hotels, which currently operates 14. So, sir, obviously, IHCL will have 44 hotels in the northeast part. Lemon Tree is Got it. also expanding to, from 80 keys to 650 rooms, 560 rooms. So that's a huge expansion. You can use those fillers at the end. Got it. Then okay, Juniper, which is on Hyatt, which is a five-star, group, which is also starting to, signing agreements with the global luxury chains. So sir, on the branded part, the branded hotel rooms in Northeast India are expected to double by 2030, adding 3,000 rooms. So currently they have 1,500 rooms over there in the Northeast. That's a huge jump. So you can also now what is your after the morning call or whenever you read this news, you have to find what is the average room rate around there, and in the Northeast. Just go and Google it. What is the price of IHCL there? So इनका अगर revenue per rooms अगर increase हो रहा है, मतलब will it increase occupancy, क्या हो सकता है, tourism वहाँ पे कितना है? अभिषेक also mentioned 3-4 tourist destinations हो गए, तो तुम भी तो mention कर सकते हो ना यहाँ पे कि सर ऐसा ऐसा है. Correct. What Correct. happens when you say something like this, na, the interviewer gaps an eye. Okay, this guy is not only reading newspapers, he's going deep and understanding कि वहाँ पे क्या है. Because obviously Northeast, मुझे तो पता भी नहीं Northeast India में क्या क्या आता है, as in the tourism place, because I have never been. That is a quite secluded place in India, but now it is growing. तो हमको पता होना चाहिए. Being an Indian, we should know what is happening there. I will also start doing it. दो तीन पता है मुझे, वो national park है, and I think दो तीन और जगह है which I was googling around. तो ये सब इट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च. ये सब तुम्हारे न्यूज़लेटर्स का पार्ट होना चाहिए. सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. तो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? तो यहाँ पे इतने टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. Obviously, it is not a corporate hub. सबको पता है नॉर्थ ईस्ट इज नॉट अ कॉर्पोरेट हब, इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन. सो टूरिज्म इज इंक्रीजिंग इन इंडिया. वो हमने उस दिन देखा, FTA, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, सी व्हाट इज द डू फॉरेनर्स गो टू नॉर्थ ईस्ट, एंड गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सर 4.8 ट्रिलियन. तो भी 4.8 ट्रिलियन कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है गवर्नमेंट वहाँ पे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, व्हाट इज एक्जैक्टली गवर्नमेंट डूइंग? रोड्स, ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले बात तो रोड्स ही आते हैं. Correct. सो हाउ डिड अभिषेक मेंशन ना कि वो रोड सर नॉर्थ ईस्ट से सब जगह जाता है, फ्रॉम एक जगह से ना इट रीचेस टू एवरी पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट. सो कैसा है हाउ हाउ डिफरेंट ही इज टॉकिंग अबाउट. अभी ही इज एनालिस्ट, दैट इज द डिफरेंट रीजन कि वो एनालिस्ट है इसके लिए बात कर रहा है, बट वो पता होना चाहिए वो क्या. ही इज नॉट क्योंकि वो MBA है, CA है, इसके लिए उसको पता है, ऐसी बात नहीं है. This is the curiosity that you should have while them. So this is how improves your newsletter, nothing else. Got it, sir. Okay. Thank you, sir. मैं कल से change करूँगा Yeah. लिखने का. नहीं, लिखना And बराबर था. Now it is, I will say now one. अगर तुमने लिखना अच्छा है, if you have written it right, you should go one step ahead. got it, sir. Thank you. Yeah. So can I go? Yeah, Ashwin, you have not raised your hand. That is why I didn't. No, actually I'm using the web Acha, meetings. okay. I was Okay. unable to. Okay. Go ahead. Yeah. Yeah, so so I'm presenting it for the first time today.
So I'll just talk in brief whatever I could collect. So I'm going to talk about how the men's grooming industry is growing in India and how the B2C is working right now. So recently, so in the today's newspaper, I saw that Honasa, that is Mama's parent company, has done a strategic investment, like by acquiring Reginald Men. So it's a premium hell up now. It's a premium men's grooming company right now, and it has done an acquisition for 1,950 million rupees. If I see right now the men's industry, the men's grooming industry, it has out overall general all these products that are there or all the brands that are there. So men grooming has outpaced them by 10, and it is currently growing at around 10 to 12%, and has an estimation of around 18 billion rupees in 2025. So what this has done, this has created a sustainable category. Hello, Harsh. Hello, Harsh, we cannot hear you. Yeah. Okay, Badal. Badal. Yes, sir. Yeah. Badal, where is your news? I didn't see any. Sir, I have sent you on the number. That's a photo. Okay, fine. Yeah, go ahead. Yes. Just a second. Let me open, sir. Yes, sir. Hello, everyone. Good afternoon. I have a news regarding finance and IT Am I stocks. audible? See, biggest sell-up. Harsh, 1 second. He is just presenting. Okay. Yes, sir. That is, foreign portfolio investors (FPIs) have sold off Indian equities in the first half of December 25. Badal, why Yes, are sir. you talking about this FPI pulls out? इसका तुम्हारे PNL से क्या लेना देना? सर ये न्यूज़ था। न्यूज़ तो बहुत सारे था, तो ये बता ना मारुति के बारे में, नई गाड़ी चालू की है, नया उसने ये किया है, वो किया है. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेलिंग ऑल दिस थिंग? सर मैंने क्योंकि टिप्स दिया है ना, हाउ टू राइट द न्यूज़लेटर्स. हाँ सर। देन कंपनी के बारे में कुछ नहीं तो व्हाई आर यू एन राइटिंग दिस? ये क्या कर रहे हैं? एफपीआई पुल्स आउट 178 बिलियन इन अर्ली दिसंबर. क्या करूं मैं इसका? क्यों निकाला, बताओ मुझे क्यों निकाला? सर क्योंकि स्टॉक पुल आउट हो गया तो मार्केट क्यों के ऊपर इफेक्ट आएगा तो क्या इसलिए। हो गया? स्टॉक क्या हो गया? सर स्टॉक पुल आउट हो गया ना, इसलिए मार्केट के ऊपर इफेक्ट आएगा इसलिए। कूल आउट हो गया? व्हाट डू यू मीन बाय कूल आउट? सर मीन्स सेल आउट। क्या सेल आउट? सर व्हाट डू यू मीन, मुझे बताओ फाइनेंशियल टर्म में, व्हाट डू यू मीन बाय सेल आउट? सर आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग सर। देन व्हाई आर यू राइटिंग द न्यूज़ इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग? तुम मुझे डेटा नहीं बताओ, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, मैं 4 बजे उठ के सब पढ़ चुका हूँ. तुम मुझे क्या बालक बता रहे हो? हाँ सर। सिर्फ एनालिसिस करके बताना होता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है. ओके सर। Yes. Yeah, Harsh, go ahead. Yeah, Harsh, go ahead. Harsh, go ahead. Yeah. Yeah. So I was talking about how the men's grooming industry is growing, and it has outpaced the overall, that is the generic skincare industry in general. So, and I was talking about how the acquisitions have done in similar. So, like Godrej Consumer has recently acquired Mustache. So even they have for the face washes that they are going for. And if I see, they are mostly the main gameplay that like I just went through all their websites, and majorly the gameplay is like their focused products that they're going for men in particular. Uh, yeah. So like even if I talk about how Hosana is going to scale this business, so basically they have the distribution business in overall, and also online is going to be a main tailwind for them because of the established thing. And that's it. So like this was what I've written about. Yeah, so there is about Godrej you're talking about. There is, I think, Mamaearth, men grooming. I think Marico is also there in the men grooming, correct? You can also mention these are three companies: Like Hosana, Godrej. it's Beardo and the Man Company. Yeah, so how can you frame this, Harshvardhan, is, Honsa consumers, So okay, like these are all sorry, your voice is not audible.
Okay, Hello. Ankita? Yeah, sorry, it's coming. Yeah, Am I audible? yeah, you're audible now. Yeah. So yeah, so like the USP of this, the products of Regiland in overall is like they are priced at a very premium price list. So even if I talk about their face serums and the sunscreens for 50 ml and 30 ml, if I talk, so they are around 1300 to 900. So this is what their individual pricing products are. And if I compare with the other products, that is for the mustache or even the beardo, so they are, I think they are under 500 mostly for the same ml, the product that they have been done. So I Okay. think they have a good market to acquire over here. The premium, the luxury available, niche products. You have also mentioned leading Uh, products like players like Godrej Consumers, Marico, Imami has also into the main group. Okay, fine. It is growing by 10 to 12%. Okay, Marico is talking a lot about men grooming in its conference calls. A good one. Okay. I can write the product pricing also, if possible. If you write on LinkedIn, you can yeah, write the product pricing also. Why yeah, Honasa is better than other companies. yeah. So like I have like I just went to the website and I just compared it with their peers, Hmm. and they are, I think they have placed it in a very premium place overall. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Okay. Ankita, they want Titan. Hello. Yeah. Yeah, sir, should I present? Yeah. Go ahead. So, Titan Eyes 1 billion watts sales in 2 years, which led by the factors such as like premiumization and retail footprint expansion and growth of the like international divisions also. And backed by these factors with rising incomes, Titan is looking forward, and it has also expanded the retail footprints Helios and Helios Luke stores. And talking of the expansion, it currently has 282 Helios and Helios Luke stores, and it also aims for more expansion with 20 outlet stores of Helios Lukes by 2026 and 40 by 2027. And talking of the figures, they posted a CAGR of around 16% over past 4 to 5 years, and now is focusing on the mid-premium segments and premium segments, ranging from 10,000 to 25,000 and 25 to 1 lakh respectively, and also reported a revenue of 45.76 billion with a growth of over 17%. Now, looking at the facts and financials, it is quite optimistic about the growth of the Indian premium luxury watch market. So, uh, hello. Premium and luxury. Yeah. The premium and luxury is Yeah. expected to grow by 30%. Yeah. You Yes. got that. Yeah. Yes, sir. Hmm. So there is a expectations of increased sales and expansion due to the expansion of these things. Yeah. Good one. So now again, so guys, Thank you, sir. my thought process of premiumization is what you see. Harshvardhan's talked about the growth in men grooming segment, which is a premium product. Again, Aitan is talking about again, having Hillos. Now you can mention the price, 25,000 to 1 lakh. Now this is quite expensive, Usually people don't buy 1 lakh rupees watch. 25,000 is also an expensive, premiumization probably. So Mhm. premium and luxury segment is only growing in India. Yes. So yeah, Mhm. overall the theme is like premium. That whatever you talk about premium, I am interested in knowing that is what is happening in that, because premium Mhm. will have a low cost plus a higher margin, and Titan is available everywhere. You have a mass segment as well as a premium segment. So I have a question. So Hmm. what will be the what are the causes of this premiumization? Like increased Increasing income, one thing, and other factors which are like contributing to increasing this. income, GST rate. So majorly is disposable income, increase in disposable income. And see now when So, you are see mhm. when economy is growing, let's say when you are a educated, let's say you are an MBA or a CA, you earn 10 lakhs, ठीक है, 10 12 lakhs. अभी तुम जाके Mhm. obviously सस्ती घड़ी तो नहीं लोगे ना.
Of And course. the mindset of people is aspirational buying. It's always an aspirational buying. अभी Hmm. तुम होटल जाओगे तो यू हैव एन एस्पिरेशन ना टू गो टू ताज या गो टू आईटीसी. तुम्हारी लाइफ में ऐसा एस्पिरेशन तो नहीं होता ना कि आई विल गो एंड बाय, मैं एक ओयो में जाके रहूँ. ऐसा तो एस्पिरेशन नहीं होता है. इट्स ऑलवेज एन हाई नहीं. एस्पिरेशन. एंड इफ यू हैव मनी एंड नाउ चीप अवेलेबल ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, यू कैन गेट जो पहले नहीं था इंडिया में. प्लस आवर पेरेंट्स माइंडसेट इज नॉट अबाउट स्पेंडिंग, आवर माइंडसेट इज अबाउट स्पेंडिंग. जितना भी पैसा है, आई हैव सीन माय फ्रेंड्स स्पेंडिंग, पूरा बैंक खाली कर देते हैं. मतलब एक दो ये लाख रुपए सैलरी है, 2 लाख पूरा खर्चा कर देते हैं वो लोग. हम्म. गाड़ियां लेते हैं. सर, दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट कुछ कुछ लोगों के माइंडसेट्स ऐसे भी होता है ना, लाइक इवन इफ माय इनकम इज लाइक 10 lakh or 15 lakh, so why should I spend this much amount, like 1 lakh 2 lakh on watches? So rather than spending it in watches, I can like build something, like I can contribute it to like buying some land or something, so which See, are like वो more माइंडसेट profitable. काफी कम है ना. इफ यू गो एंड आस्क अ जेंजी, तुम्हारे बच्चों तो बच्चे, मेरे भाई के पास 22,000 का जूता है. ही इज इन 7th Hmm. स्टैंडर्ड. मेरे पास नहीं है इतना महंगा जूता. मैं कमाता हुआ. तो वो दैट दैट Hmm. जनरेशन, द जेंजी जनरेशन इज स्पेंडिंग अ लॉट. एंड इंडिया में सेविंग्स कल्चर कम हो रहा है. Hmm. पीपल आर स्पेंडिंग. ऐसा नहीं है, कुछ लोग नहीं है. ओवरऑल वी लुक एट द ओवरऑल पिक्चर ऑफ इंडिया. Okay, okay. ओके. सर वो Okay. ऐसा, अगर ऐसा होता तो इथॉस 25% क्वार्टरली ग्रोथ नहीं देता. बट मतलब ना वन इथॉस मोर तो थिंग. 25 to 1 lakh भी नहीं है. इथॉस हैज, फॉर योर इंफॉर्मेशन सर, इथॉस हैज स्टार्टेड टू डिसकंटिन्यू इट्स सब 50,000 सेगमेंट. हाँ, उसने बोला है कि मेरे को वो करना ही नहीं है अभी, सब 1 लाख के ऊपर ही करना है. अच्छा. हाँ, अच्छा, इज इट? ओ. वो बोलता है वहां पे मार्जिन नहीं मिलता है, फिर मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंपोर्ट करता है ना बेसिकली, क्योंकि हाँ वो हाँ हाँ. इंपोर्ट में इतना सीएचएफ बढ़ गया है अभी, स्विस फ्रैंक. तो वो करके कोई करेक्ट. हाँ. मतलब नहीं बनता उनको. एंड देर आर नो, एज यू से, प्रीमियमाइजेशन has caught up so much कि people are buying 1-2 lakhs का वॉच. अब एप्पल वॉच लेने जाओगे तो उसका टॉप एंड आपको 30,000 के ऊपर आता है. करेक्ट. एंड इफ यू करेक्ट. लिसन टू टाइटन का, आई वुड सजेस्ट, बिकॉज ये न्यूज आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ. टाइटन का वॉच का सेगमेंट के बारे में इफ यू लिसन टू रीसेंट कॉन कॉल्स, उन्होंने सबने फ्लैग किया है कि एनालॉग वॉचेस का ग्रोथ काफी ज्यादा हो रहा है ज्यादा अभी हो रहा है. स्मार्ट वॉचेस से ज्यादा, बिकॉज स्मार्ट वॉचेस में अभी क्या है ना, सब लोग आ गए. सब लोग आ गए. 2,000 करेक्ट. का भी आपको स्मार्ट वॉच मिलता है अभी, किधर मीशो पे मिल जाएगा 2,000 का. ठीक है. करेक्ट. तो वो ऐसा हो रहा है. आप वो दिखाओ भी. और टाइटन ने अभी रिसेंटली डुकाटी के साथ भी डील साइन किया, अभी थोड़ा दिन पहले आया था. डुकाटी जो कार है ना, हाँ उसके हाँ. साथ, उसका वॉचेस के साथ वॉचेस. दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट. सेल इट इन इंडिया. तो ये सब काफी अच्छा है. हीलियोस हीलियोस लक्स वगैरह लक्स. अच्छा हाँ. है. एंड इट इज ऑलवेज ऑल्सो लुक एट हाउ मच मार्जिन्स नो वॉच करेक्ट. बिजनेस करेक्ट. दस. तो ये वॉच का अभी, मेकिंग कॉस्ट क्या है ना, हार्डली कुछ है ही नहीं उसमें रहता है. हाँ, एंड ऑल्सो इसने बोला है ना कि आई थिंक अराउंड 14% कुछ करता है अभी ईबिट मार्जिन वॉच में वॉच टाइटन. है. उसने ओके. कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला था कि वो 16-17% कर देगा, And बिकॉज that's ऑफ, a huge number then. नहीं हम्म. ह्यूज मतलब वो ओवर अ पीरियड टाइम आएगा, मतलब एक साल में नहीं आता है वो एकदम से. ठीक है, तो वो Hmm. आएगा, बट उसका ड्राइवर क्या रहेगा, यही ड्राइवर रहेगा ना. एंड अभी Hmm. ये भी हो गया ना, मतलब बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन स्टार्टअप्स, लोगों के पास पैसा भी काफी आ गया है. वैल्यूएशन स्टार्टअप में शार्क टैंक देखे थे हाँ, वो लोग. हाँ, हाँ. ये अरे पहले नहीं अगर था ऐसा. सर अगर कोई डीएलएफ कैमिलिया में घर खरीद सकता है तो वो 1 लाख का घड़ी तो हाँ, इजीली इसे खरीद ये लेगा. रहता है. वो हार्दिक पांड्या 5 करोड़ की घड़ी पहन के 5 करोड़ की क्रिकेट घड़ी पहनता है मतलब. क्रिकेट खेलने एंड प्रैक्टिस एंड करता है वॉचेस, ऐसा. एंड ऑल्सो रिलेट वॉचेस टू स्टार्टअप एंड कॉर्पोरेट कल्चर, बिकॉज यहाँ पर द टॉप सेल्स पर्सन, द टॉप कॉर्पोरेट पीपल ऑलवेज प्रिफर सच थिंग्स टू, इट इज एज अ, सेल्स पिच होता है वो. सिंबल, स्टेटस सिंबल होता है हाँ. वो बेसिकली. I think things वैसे भी are होता है. changing to US right now. In वो सही US है. and in other European countries, watch are look like a asset, and they start judging करेक्ट. people on the way how they are wearing watches. So I करेक्ट. हाँ, think वही same आप is ईथॉस coming का to वेबसाइट पे जाके, India. ईथॉस का वेबसाइट पे जाके प्राइस हाई टू लो करोगे, Yeah, just do it for a curiosity, you will find the highest watch is priced at around 3.5 crores. 3.5 crores. Yes. हाँ. क्रेजी. Okay, so टाइमेक्स का भी देख लो, टाइमेक्स का भी प्रीमियम सेगमेंट आता है शायद, वो भी एक बार यू कैन जस्ट वेबसाइट पे आके देखने का ऐसे हाँ ही कि क्या प्राइस है, हाँ हाँ. क्या नहीं है. है. okay, I would like to add one point. I mean, मुझे लगता है कि it is important. I mean, I think the market valuation that premium products have today in India, I mean, it is not matured yet. So even a significant change will look a high percentage. So that is also, I mean, a big
Yes, yes. I So think the that is brands what. are changing right now in India. We have seen like there are many companies I'm seeing now. They are coming from grassroots area, grassroots from India, and they are changing the premiumity Migration to of India. the India. And we have all I have like seen that people are not going on LV and the other brand coming out of India. They are more interested in the companies which are growing in-house product in India. Yes. So Yes. I think the market is still immature, but it will get mature in few years in future, and we will see more After luxury it, brand in India rather than we are looking outside of India. I think okay, this so changed I mean, the yeah. after it will get mature, I think the growth percentage that we will see, which would be would be much more different. Now See we are the getting like 30%. She just told us the one which was Yeah, speaking it's right now. always She with told us premium that product. 30% growing Yeah, growth it's was same yeah. with every premium product. When See, you get so the the demand, question the is, margins increase rapidly. guys, the question Yeah, is over here. When you say ना it will become mature और वो ऐसा होगा yeah, तो तुम क्या कर रहे हो? तुमको वही ढूंढना है कि मैच्योर कौन सा होगा. yeah, yes. तुमको ये नहीं बोलना मैच्योर I होगा, think, शायद से होगा. तो yeah, तुम्हारा काम ही but वो है कि ढूंढना yes, विच विल मैच्योर. तो यू हैव टू y- हैव प्रभु, यू हैव टू हैव yes, दैट एनालिसिस कि सर ये ऐसा हो रहा है तो ये मैच्योर होगा. यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ एनालिसिस. नॉट कि yes, सर अभी छोटा मार्केट है ये मैच्योर हो सकता ही yeah. नहीं. यू हैव टू सर होगा. दिस इज हाउ योर एनालिसिस. Yeah, सर this will happen for sure. I'm not right now. I'm not या in like deeply involved in या Indian markets. That's why I didn't have a या much ओके. insight. So that's what we, that's what we do. मतलब, whichever market it is, we do the analysis that if this is happening, so today what you need to do, where you need to invest your money. Let's say if you want to start a business, so I mean equity in market. If you want to invest Yes. in an equity of a company, is the watch is the biggest market. Now, looking at the trend, we can see, watches is currently, 5 crores watches people are paying and playing cricket on the live television. So, and there is a lot of, and see, India, probably because of that huge population, 1% of rich people can, 1% of people who are billionaires in India, that will be around, 100 crore ka 1%. It is like 10 It's crore like people. 10 crore people 10 crore almost. billionaires, it is where we can, koi company, koi country ka GDP ho jayega utna. Yes. That's a huge number in India. Yeah. Okay. So that is why, India looks at the potential market for premiumization. I think Yeah. what trend I'm seeing right now, it's gonna be in premium clothing rather than Yes. watches, more Clothing mein, premiumity. clothing, yeah. I think because there's a convocation in Dubai where where we see a lot of Indian premium clothing brand which went to Dubai just to show their clothes. They are just trying to change the ecosystem, how people are uh, uh, like uh, how people are changing as the money is coming and how they are changing their lifestyle and mixing the Western culture with the Indian uh, Indian. artisans. So I think in those products there will be a huge potential in future. Yes. Yes. Also the handbag sections, like the Yeah. handbags and everything. Those are not It listed also. in India, so that is, Mm-hmm. Like news Okay. था, I don't know if anybody has read this. ET में ना there is a very interesting news on liquor. If you see liquor, Delhi, हाँ, Saudi का ना, oh Saudi का. Delhi वाला. If Okay. that BJP started cracking down on the AAP era liquor, तो उसमें ना why I'm saying it's a very important news because उसमें उसने clearly लिखा है कि यहाँ पे ना if you see they have written that now national brands will start getting the shelf in Delhi. तो ये ना वो IMFL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वे. तो जो आप Okay. मतलब मैंने प्रीवियस कॉल्स में सुने हाँ थे वो यूट्यूब में कि आप रैडिको वगैरह की बात कर रहे थे. हाँ ठीक है. हाँ. तो ये उस पर्सपेक्टिव से वी शुड सी कि ये कैसा है. इसमें ईटी में ही आया था दिल्ली अच्छा. एएपी एरा. मैं आपको एक मिनट पेज नंबर बताता हूँ उसका. इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज. Okay. कभी कभी ना ये चूक जाता है ऐसे हाँ, इसमें ये रहा, हाँ, मतलब बीजेपी क्रैकडाउन, वी. लिकर पे हाँ हाँ. ये ना प्योर पॉलिटिक्स में रहता है तो हम लोग को लगता है वो हाँ, मतलब. मैंने भी ध्यान नहीं दिया. हाँ. हाँ. हाँ, See, ओके, government मैं to तो cap brand share at 25% so that national brands can be added to Delhi shelves. उसने बिल्कुल. ओ highlight भी ग्रेट. किया है. According to sources, national हाँ. brands have still not found their way into the shelves. ओ, दिल्ली इज अ ह्यूज मार्केट. Yeah, it's a huge market.
I think if you ever been to Gurgaon, नहीं, Gurgaon doesn't come in Delhi. yeah, Gurgaon doesn't come in, but if you go to the nearby areas near Delhi, I didn't know inside the Delhi liquor shops, but the shops around the Delhi, there's a separate section just for Indian wines and Indian liquors now. But I don't know about the नहीं, दिल्ली में लिकर का इशू था, वो yeah. मार्केट अभी खुला है तो Okay. हाँ, सो देयर वाज अ इशू सर पहले, Okay. एएपी का कुछ तो इशू चल रहा था ना वो। अच्छा हाँ आपका हाँ करेक्ट हाँ Yeah, तो app has issued 21,000 around the license. नहीं, वो सब नहीं, देयर वाज अ वेरी डिफरेंट इशू दैट वाज गोइंग Okay. ऑन। द दिल्ली लिकर मार्केट वाज यू नो, काफी सारे कंपनीज को हीट भी हुआ था उसकी वजह से। कौन कॉल सुनोगे तो पता चलेगा, एलाइड ब्लेंडर्स, एडिको वगैरह का। तो हाँ, तो अभी वो ओपन अप हो रहा है, अभी हो रहा है, तो यू नो द सेल्स आर गोइंग अप नाउ। बट दिस न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग, हाँ करेक्ट क्योंकि करेक्ट हाँ अभी का कॉन कॉल में ना दे विल स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट दिस। दिल्ली हाँ अरे आई मिस्ड आउट, मैंने भी पढ़ा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को तो अच्छा लगा ये आर्टिकल। I have a question. Did you have any insight on raw liquor industry right now? What is raw liquor? So it's like the companies who create alcohol for other companies, like Indra. So I live in area near Muradabad. So they are opening liquor companies. They produce alcohol and they sell to big brands. So is there any You mean market? contract manufacturing? Contract Yeah, contract उसमें manufacturing. मार्जिन भी देखना होता है ना। Yeah, there's. I'm just asking, like, do you have any insight on that? नहीं, Okay. अभी नहीं, इतना नहीं। Okay, ब्रांडेड guys, ही देखना जनरली, क्योंकि उसमें आपके पास नंबर्स होंगे, जैसे सर बोलते हैं ना, वैसे वॉल्यूम नंबर्स आपके पास होंगे। ये सब में वॉल्यूम नंबर होता नहीं है, इधर का उधर डेटा होता है, मतलब डेटा नहीं मिलता है फिर। सो बेसिकली वी शुड सी, No, लाइक like सर सेज ना। right now we have seen a surge in sugar meals. So what are the sugar meals are doing right now? They are Switching to changing the way they are making liquor. So uh, uh, the things are left after extracting the sugar syrup. They use those things to create a liquor right now. So the process is changing, and the margins will be higher because they are doing in houses. So right now there are two sugar mill near my house, near my city, and they are changing their facilities into a alcohol industries. Hey, So I Prabhu, think we will see the shift. So when you I talk, just want an insight on that if you have any. so when you talk about this shift now, Prabhu, you Yeah. need to first understand as an individual that what is the difference between the sugars of two companies. Okay. If you cannot distinguish those things, this will then Yeah. it will be a general discussion where no one will benefit from this. Okay. That इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, सब में तो Okay. if ऐसा है तो सभी sugar mills तुम बोल रहे sugar mills Yes. is doing good, everyone will do the same thing. So Yes. till you don't, well, I refrain from this industries. If you are not deep into it, Okay. discussing on it will be unnecessary waste of time for everyone. Okay. Okay. If Sorry. you ask specific questions, sir, let's say your KPR Mills is doing something which the other Uttam Sugar is not doing, then I will be interested to know. अच्छा ये अलग क्या कर रहा है? Okay. I have to articulate my questions more better. Yes, yes. So it will be a truthful conversation, or else it will be just time pass. You are just talking, conversing. Okay. No one is benefiting from it. Okay. Okay, got it. So always have that one part that why is other one is different, and that's why first of all I said Meesho doesn't have competitors. I will not even put hand in Meesho. Okay. Competitors नहीं है तो मुझे research ही नहीं करना है उस पर. Yes. And Okay. if it's a commodity type of business, so you cannot say so this will grow. Everyone will grow then. It Okay. is like saying, sir, pharma companies will invest in pharma. Why? Because everyone uses medicine. Everyone falls ill. So let's buy pharma. So that doesn't make sense. Okay. Okay, got it. Okay, okay, guys. I think sorry, Om. Om, you want to say? Sir, Yeah, yeah, last sir. one. I will take the last one. Sir, Yeah. it's a B2B business, but I think it is a very interesting company. It's about shrimp exports. So India is one of the biggest shrimp exporters in the world. And so now that US has imposed tariffs on us, the shrimp exports have reduced. But non-US exports have risen by 30%. And this has benefited the shrimp exporting companies like Apex Frozen Foods and Avanti Feeds. So basically, there are many countries where we export shrimps like China, Vietnam, Russia, Canada, and the
the exports have in these nations have grew by 18% year on year and by 21% quarter to quarter basis. And Okay. and the non-US share of revenues contributes to 56% in quarter two of FY26. And shrimp specifically contributes to 70% of seafood exports, which is also about 1/6% of the global output. And sir, carriage ratings have expects that this shrimp production due to US tariffs will reduce by 10 to 12%, but it will offset because of the non-US exports, and which is expected to grow up to 27% year on year basis globally, and around 78% in non-US markets in the first 5 months of FY26. Also, there is a certain type of a shrimp that is vanme, which is around two third of our shrimp exports. And because of new technology and AI infusion, these are about to grow to 100 to 120 tons in future. And yes, sir, that's all. Yeah, okay, fine. And good, I think this is a good news. Even I was tracking this news way back when I was tracking these Apex Foods and Avanti Foods. Yeah. Yeah, something is shrimp. India shrimp business is growing. I don't know what is the market size of that business, but UK, US was a bigger market. But now since because of the increasing quality of our products, so this was there in the news way Yes. 1 2 years back that in India the horticulture, not sorry, Yeah, I yeah. don't know what is called that. I think sea culture, something like horticulture, something they call it. Aquaculture, sorry. Yeah, so aquaculture is increasing in India. There is a lot of farming, aqua farming, which is happening in India, and the quality is improving. Yes. Apex Food, Avanti Food, there are also 2 3 small companies over Yeah. there, Sea Coast and all. So And sir, our competitors are Vietnam and Ecuador, and Ecuador. we are the highest number of we export the in large number, like the Large numbers, shipments yes. around Yes. 1,70,000, and Vietnam is like 29,000 and Ecuador is 16,000. So we are uh, upfront by good margin. I have this Apex Food from so many years in my portfolio. Somehow it has not performed, but Sir, Avanti Feeds has performed Avanti Food has really performed, good yes, in yeah. last 2 years. Yes, yes. Avanti also I have. Because I think 2 years back there was something in the budget also for this shrimp exports. Okay. Avanti is up 71% in my portfolio, whereas Apex is down 8%. But I took this for research purpose. Somehow difficult sector, B2B, so that I avoided talking on it. I don't eat तो फिर मैंने छोड़ दिया. Okay. Okay, guys, I think it's late. I have another call in 5 minutes. Okay. Thank you. Thank you so much, guys. It was a great discussion today. So again, on tourism, things are coming on tourism on a daily basis, and talking about the theme, premiumization. Whichever you find, just you have to come up with a research on that. कि premiumization हो रहा है तो किस में हो रहा है? Why it is increasing? First, the hotel is definitely. I will say I have invested in hotel industry. The कौन सा hotel, कौन सा stock that you have to tell me which stock. Forget about getting a role job. मैं ऐसे ही तुमको अगर जागो ना तुम इंटरव्यू में, and sir, this is the stock that I have invested. I know ये मेरा report था. This is the news I written. I have posted on LinkedIn. People get impressed. So always think about making money on your own. Then jobs are easy in this field. If you don't think it's update ही करना है sir, so it will not help. Okay. Okay, guys. Thank you so much. See you tomorrow, same time. Sir, I had one that short note on that quick commerce update. So I had shared with you. Just look at it. Have a look on it. Sure. Okay, I'll have a look at it. Okay. Okay, guys. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you, sir. Thank you.